सभापति जी। Papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwalji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 11 in today's revised list of business. Sri Fagan Singh Pulaste. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यवाही के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। जनरल सेवानिवृत्त V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 3 of the revised list of business. Sri Ramdas Athavale. Respected Chairman, sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. साध्वी निरंजन ज्योति. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। श्री नित्यानंद राय. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री वी मुरलीधरन. Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 17 in today's revised list of business. श्री सोम प्रकाश. With your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 8 in the revised list of business for today. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी. आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखती हूँ। श्री ए नारायण स्वामी. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I lay the papers of the table of the House mentioned at serial number 10 of today's revised list of business against my name, sir. श्री B.L. वर्मा. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यवाही क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। श्री अजय कुमार. सभापति जी, मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री भगवंत खुबा. आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची क्रमांक संख्या 13 पर मेरे नाम के सक्षम उल्लेखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री ए नारायण स्वामी. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I lay the papers on the table of the House mentioned at serial number 14th of today's revised list of business on behalf of Sushri Pratima Bhumika, my colleague Minister of State, Minister of Social Justice and Empowerment, sir. डॉक्टर सुभाष सरकार. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 दस्तावेजों को पटल पर रखना के क्रम संख्या 15 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। नमस्कार। श्री विश्वेश्वर टुडू. Sir, if you permit, I would like to. But seek the permission according to rules. So I am told that it has been already. Told by whom? By the Minister's office. See, Vishweshwar Am I concerned with that? No, I am here to get that. No, you have to follow the rules. If you don't follow the rules, not present. Shri John Birla.
Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the paper on the table of the House as mentioned against my name at serial number 17 in the revised list of the business for today. Honorable members, the Honorable Minister of Parliamentary Affairs has proposed that the sittings of the current 263rd session of Rajya Sabha may be extended for 1 day up to Saturday, the 10th February 2024, in order to complete essential government business. Honorable members, the matter was also discussed in the meeting of the Business Advisory Committee held yesterday, the 6th February 2024, and the members of the committee and leaders of parties present had agreed to extend the sitting of this session of Rajya Sabha up to Saturday, the 10th February 2024. There will be no 0 hour and question hour on that day. Yes. निवेदन है आपसे कि जिस दिन मैं यहाँ पर भाषण किया, We'll take it up there, sir. I have a letter with me. I thought you were speaking on this point, sir. Your very detailed communication is with me, sir. I have to inform honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members: Srimati Sulata Dev, Srimati Mamta Mohanta, Miss Saroj Pandey, Srimati Vandana Chauhan, Dr. Sudhanshu Trivedi, Sri Rakesh Sinha, Sri GVL Narasimha Rao, Dr. Amar Patnaik. Reports of the department-related Parliament Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, Sri Vivek K. Dhankhar. Honorable Chairman, on behalf of the Chairman and members of the Department of DOPT, Law and Justice and Pension, I present the following 4 reports. 141st report on the subject of judicial infrastructure in the northeastern states of India. 142nd report on the subject of strengthening of legal education in view of emerging challenges before the legal profession. 143rd report on the subject of review of the working of legal aid under the Legal Services Authority Act 1987. And 144th report on the action taken on the 133rd report of the Committee on the subject of judicial processes and the reforms pertaining to Department of Law and Justice. With your kind permission, may I table them, sir? Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Sri Harnath Singh Yadav. माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अंकित अपने नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 67वें, 68वें, 69वें और 70वें प्रतिवेदन के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Sri Harnath Singh Yadav. माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 62वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरणों की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Sri Satish Chandra Dubey. मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख तथा उल्लिखित उपभोक्ता खाद्य
और सार्वजनिक वितरण संबंधित अस्थायी समिति के 39वें और 40वें प्रतिवेदन एक एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूँ। Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Dr. Ashok Kumar Mittal. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the 29th and 30th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, as listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, Shri Neeraj Dhankhar. Thank you, Chairman, sir. I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, 53rd report on development and promotion of jute industry pertaining to the Ministry of Textiles, 54th report on schemes, programs of Central Silk Board for development and promotion of silk industry pertaining to the Ministry of Textiles, 55th report on development of cotton sector pertaining to the Ministry of Textiles, 56th report on implementation of skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion Sankalp project pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, 57th report on the action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 50th report, 17th Lok Sabha on welfare schemes and social security measures for textile workers in organized and unorganized sectors pertaining to the Ministry of Textiles, and 58th report on the action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 49th report, 17th Lok Sabha on functioning of Directorate General of Training pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you. Statements of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, Shri Neeraj Dhankhar. I rise to lay on the table a copy of each in English and Hindi of the following statements of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, statement showing further action taken by the government on the 35th report, 17th Lok Sabha on action taken by the government on the 33rd report, 17th Lok Sabha on implementation of National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS, National Apprenticeship Training Scheme, NATS, pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Education, Department of Higher Education. Statement showing further action taken by the government on 38th report, 17th Lok Sabha on action taken by government on the 30th report, 17th Lok Sabha on demands for grants 2022-23 of the Ministry of Labour and Employment. Statement showing further action taken by the government on 39th report, 17th Lok Sabha on action taken by government on the 31st report, 17th Lok Sabha on demands for grants 2022-23 of the Ministry of Textiles. Statement showing further action taken by the government on 44th report, 17th Lok Sabha on action taken by the government on the 36th report, 17th Lok Sabha on implementation of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, PMKVY, pertaining on the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Statement showing further action taken by the government on 45th report, 17th Lok Sabha on the action taken by the government on the 37th report, 17th Lok Sabha on the development of man-made fiber pertaining to the Ministry of Textiles, and statement showing further action taken by the government on the 47th report, 17th Lok Sabha on the action taken by the government on the 42nd report, 17th Lok Sabha on the demands for grants 2023-24 of the Ministry of Textiles. Thank you, sir. Reports of the Public Accounts Committee, Shri Shakti Singh Gohil, not present. Dr. Sudhanshu Trivedi. Sir, with your permission, I rise to lay the Hindi and English version of the report number 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, total 21 of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's revised list of business.
statements of the department-related Parliamentary Standing Committee on Railways, Sri Narhari Amin. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। Statements by Ministers Sri Danve Rao Sahib Dada Rao. सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला आयात प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा 2022-23 के संबंध में विभाग संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के 37वें 38 सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूँ। Sri V. Muralidharan. Chairman sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my colleague Sri Ajay Bhatt regarding the status of implementation of recommendations contained in the 35th, 36th, 37th and 38th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to demands for grants, that is demand number 19, 20, 21 and 22 of the Ministry of Defence for the year 23-24. Honorable Leader of the Opposition. सर, 2 तारीख फरवरी मैंने जो यहाँ पर चंद पॉइंट्स अपने भाषण में उठाए थे, उसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहला जो मेरा रिमार्क्स एक्सपेंज हुआ है, कारण बताता हूं ना। नहीं सर, if you will read what has been expunged will not be appropriate. So you please indicate the premise of it. I am open to it. Please, I want your communication. Please sir. एक्सपेंज हुए हैं, मैंने उनमें किसी का भी नाम नहीं लिया, तो किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है, जो मेरे रिमार्क्स एक्सपेंज हुए हैं उसमें रूल्स के मुताबिक किसी भी पर्सन्स इन हाई अथॉरिटी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया गया। रूल 238 5 ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा के एक्सप्लेनेशन में साफ साफ पर्सन्स इन हाई अथॉरिटी का मतलब लिखा गया है। अगर मैं आप इजाजत दे तो वो भी पढ़ूंगा। प्लीज सर, प्लीज। तो पढ़ूंगा। 238 ये रूल ये कहता है, नो एलिगेशन ऑफ ए डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी नेचर shall be made by a member against any other member or a member of the House unless the member making the allegation has given a previous intimation to the chairman and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter of the purpose of reply, provided that the chairman may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is opinion that such allegations are derogatory to the dignity of the council or that no public interest is served by making such allegation. This is Rule 238 और 5 में ये भी कहा है कि इस रूल्स के मुताबिक may reflect upon the conduct of a person in high authority unless discussion is based on substantive motion drawn in a proper terms.
सब ये 238 5 सब क्लॉज के मुताबिक हो या 238A के मुताबिक हो, मैंने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया। और दूसरा, जो भी ये पर्सन इन हाई अथॉरिटी का मतलब मैंने आपके सामने रखा है कि इस डेफिनेशन में कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से कवर नहीं होता, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी सब्सटेंटिव मोशन नहीं लाया गया। सर, एक्सप्लेनेशन टू रूल 38 पढ़ दें एक बार। रूल 38 एक्सप्लेनेशन। नहीं, मैं बोलता हूँ, फिर आपके बाद आप कह दीजिए इसके मुताबिक है। तो मेरा कोई तीसरा पॉइंट ये है, तीसरे इसमें रूल्स के मुताबिक प्रियर नोटिस का भी कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि ना तो जिनकी बात हो रही थी वो इस हाउस के सदस्य है, और जो मैंने बोला वो बिल्कुल फैक्चुअल सिचुएशन पर बेस्ड था। मैंने जिस ट्वीट का जिक्र किया वो फैक्चुअली बिल्कुल सही है। बाद में स्पष्टीकरण जरूर आया, लेकिन मैंने जो भी बोला वो फैक्ट्स के आधार पर बोला। सर, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक ऐसा मौका होता है जब हमें कई विषयों पर व्यापक चर्चा करने पर मौका मिलता है। तो मुझे लगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये मेरा कर्तव्य और हक है कि मैं इस मुद्दों को सदन में उठाऊं। मैंने बोलते हुए ना ही किसी मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना ही किसी राज्य से उस राज्य का नाम लिया, उसका जिक्र भी नहीं किया। इसीलिए जो मेरे शब्दों को एक्सपंज किया गया उस पर मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं, और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सदन की प्रोसीडिंग्स में इन रिमार्क्स को पुनर्स्थापित किया जाए और उन शब्दों को पूरे 2 पेज का आपने काट दिया। साहब, 2 पेज का मेरा भाषण काटने के बाद उसका उद्देश्य अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने परसों बोला 400 पार का आपने गड़बड़ किया। उसमें क्या हो गया कि लोग अरे बैठो भाई, चुप सुनो। तो आपने क्या कहा, गड़बड़ शुरू हो गई। वो शब्द प्लीज नो, इस बार भी बोले वो आगे था, लेकिन आपने गड़बड़ में उसके सामने when the leader of the opposition is on his व्याधान बोल के legs, I लिखिए। expect you can appreciate, but you cannot raise a disturbance. Please. No, nothing. Yes. तो साहब क्या होता है, ये अर्थ का अनर्थ होता है। तो जब अब गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हैं। आपने बोला इस तरीके से था। नहीं, वो आपकी है। आपके आगे मैं पढ़ूं, आपके आगे था क्या कि पूरा गड़बड़, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यवस्थान, क्या व्यवधान, तो आपने लिखा उसके सामने, तो वो शब्द चले गया दूसरा। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसके लिए पूरा देखिए 1:55 में मैंने अछूत शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर 2 बार। सर वो मत पढ़िए, मैंने एक्सपेंस किया हुआ है। नहीं, अरे मैं तो वो मेरे को एक्सपेंस का ही होना है, मेरे को दूसरा नहीं है, मेरे को होना है एक्सपेंस का। देखिए 2 बजे ऑनवर्ड्स the expunged portion may not be read. But अछूत है, अछूत sir has been held by unparliamentary. No. अरे एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अनटचेबिलिटी है। This time sir, अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी, आज मैं शीशे में 2 बार देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से ही देखकर बोलना है। तो आप भी इधर ही देखकर बोले सर।
और आप ही के तरफ आपको दो देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि इतने सीनियर वकील सब आप हैं इधर देखे तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं, उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और 2 बजे 1:55 हुआ, 2 हो गया और 2 बजे ऑनवर्ड्स उसमें भी आपने वो काट दिया, फिर 2:40 को आपने काट दिया। देखिए तो मैं ये इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको तोड़ मोड़ के अगर पढ़ेंगे लोग तो क्या होगा। अरे ये आपने जो चीजें बोली है इसमें नहीं है, मेरे को हर दफा हो रहा है। दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम माय स्पीचेस आर कट एंड दिस इज द लेटर आई हैव रिटन टू यू। एंड मैं बाहर प्रेस को नहीं बोलना चाहता था अनलेस आई कैन ब्रिंग टू योर नोटिस। व्हाट इज दिस सर, एवरी टाइम। एंड यहाँ पर तो मनुस्मृति के बारे में इतना बोला गया है, इतनी चर्चा हो गई है, और मैं जब बोलता हूँ उसको निकाल देते हैं। व्हाट इज दिस? ये इसीलिए मैं कृपया करके आप उसको जो आपने निकाला है वो पूरे पेज को आप रख दीजिए, यही मेरी आपसे अपील है। ठीक है। ऑनरेबल मेंबर्स, we have unparliamentary expressions, a book from Lok Sabha Secretariat which says achut is unparliamentary, number one. Honorable members, I have received a communication, a written communication from Honorable Leader of the Opposition. I have gone through it. I'll give my ruling on it. But I may indicate to the House that his communication is in 2 parts. He has listed 4 items in particular. Item number 1 was relating to a word which was expunged because it is unparliamentary. The other 2, 3, 4 were recorded after I had said nothing will go on record. But I'll give my ruling. This matters because this is a platform where everyone has a free right of expression and in accordance with rules. Sir, I'll give my ruling on this. ना जब तक one second. Sir. Parliamentary, good. But there have been acts now. Not understand, the times change. When the times change, the law changes. Please, I am presenting Keshav, to you. No, what do you want to say? Sir, untouchability, there has been act. It has been accepted legally as a terminology. Then please, it is for you. I want you to balance. It is for the chair or for the House to correct its book. 1 second. I would be too happy. 1 second. I will be too happy to revise unparliamentary expressions. And I may constitute a committee on that point so that senior members of the House and also young members, lest they take an offense at it, use that. We'll have an example. To the extent what the leader of the opposition has said, I will give my ruling on that. सर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर 1 मिनट सुन ले, ज्यादा नहीं दूंगा। अंडर रूल सर शब्दों का निकाला जाना, अगर कोई शब्द आपको लगे कि वो अनपार्लियामेंट्री है तो आप उसे निकाल देंगे, लिख देंगे और कहेंगे ये कार्रवाई में नहीं होगा। लेकिन जिस तरह पेज बाय पेज 10-10 मिनट की स्पीचेस निकाली जा रही, सर ये कभी नहीं होता था राज्यसभा में। पार्लियामेंट में वो वर्ड निकाला जाता है, पूरा रेफरेंस नहीं। प्रमोद जी, leader of the opposition had very firmly, categorically put across his point. ठीक है। If you want my tentative response, have the book before you. Sir. Rule 238A proviso.
And what does the proviso say? Provided that the chairman may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the council, not some individual, or that no public interest is served by making such allegation. Shri Kartikeya Sharma, matters raised with permission. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on this important issue. This concern over refusal by hospitals to release dead bodies due to pending bills. I have reserved my ruling. I'll come with it. The House will have the benefit of it. There are saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body to the family due to outstanding bills. The grieved families, already traumatized with the loss, are subjected to further distress for immediate commercial recovery. A report by the Lancet Commission on the value of death published in the year 2022 states that Mr. in Sharma, situations where a family... Mr. Kartikeya Sharma, now start. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on this important issue, which is concern over refusal by hospitals to release dead bodies due to pending bills. There are umpteen saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body of the family due to outstanding bills. The grieved families, already traumatized with the loss, are subjected to further distress for immediate commercial recovery. A report by the Lancet Commission on the value of death published in the year 2022 states that in situation where a family is unable to pay hospital medical bills, hospital staff will often refuse to release the body of the deceased until the payment is made. The Geneva Convention and the UN Commission on Human Rights make it legally binding, provide for explicit provisions relating to the proper management, dignified treatment, and disposal of dead bodies, as well as respect for the need of families. Sir, earlier answering to my question, the Honourable Minister informed the House that there is no such legal provision authorizing any hospital to withhold dead bodies in the lieu of pending bills. Therefore, I urge this august House to deliberate on the situation that will bring some relief to the mourning families. I also request the Minister concerned to evaluate and issue guidelines for immediate release of the dead bodies and subsequent period for clearing the dues. Suggestively, penalties for the defaulting hospitals and that violate the said guidelines should also be incorporated for ensuring strict compliance. There is a growing consensus at international level that all patients must enjoy certain basic rights. In other words, the patient is entitled to a certain amount of protection to be ensured by physicians, healthcare providers, and the state, which have been codified in the various societies and countries in the form of charters of patients' rights. The patient rights charters, as approved by the National Council of Clinical Establishments, is available in public domain and needs to be promoted in good spirit. Further, we can collectively implement a few steps. Spread awareness about the Patients' Rights Charter and the rights that families of the deceased have in such situations. The Patient Rights Charter enlists 17 rights of patients, including the right to information, whereby every patient has a right to adequate relevant information about the disease, right to record in reports, the right to emergency medical care, the right to informed consent, the right to confidentiality, the right to second opinion, the right to discharge of patients or receive the body of deceased from the hospital and more. Enforce hospitals to display the charter in important areas of the hospital so that accountability is held. Treat violation of the charter with firm laws, as non-release of dead bodies is treated akin to violations of habeas corpus. Create a national helpline to assist the mourning families in such unfortunate times, and create a national corpus fund. Sir, and more importantly, let's incentivize the hospitals and doctors to a community so that they encourage and follow the Patient Rights Charter. Thank you very much, sir. Shri Pramod Tiwari. Shri Pramod Tiwari. साहब एक मिनट मैंने वो उठाया और आपको कहा भी इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है और सारी चीजें I have reserved it. You have had your say. नहीं रिजर्व तो साहब रिजर्व के बाद ही आप अर्जन करने वाले हैं नहीं सर कहाँ रूलिंग होगा No, you will have it during the course of the day. अब तक तो during course of the day, before I rise for the day,
You will have a ruling perfect on this. Kindly you Come on, take. Pramod Tiwari, नहीं, you want to avail the opportunity? 2 बजे के ऑनवर्ड्स में जो भाषण हुआ 110 pages Nothing पे, will go on record, sir. ये kindly, I gave you opportunity. you Sir, take this sir, how many times I will see it? I have read it. You have sent a communication. I have gone through it. I have heard everyone carefully. I'll give a ruling on it. Shri Pramod Tiwari. सर मैं morning, आज ही early morning. आज ही करेंगे। I heard early morning. चलो, Sir, we'll change it. मैं आज एक I'll correct if there is an error. मैं I'll look into it. सर अब शुरू होगा ना मेरा 3 मिनट। Your time starts now, Mr. Pramod Tiwari. थैंक यू सर फॉर विशिंग मी। सर मैं एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूँ कि राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हालात में चिंता व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, आज हम अपने देश में धर्म के राजनीतिकीकरण के उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं और ये हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक खतरा पैदा करता है। एक देश के रूप में हमने हमेशा दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया। हमारे धर्म ने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है और ये हमारा संवैधानिक, धार्मिक और व्यक्तिगत दायित्व है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पूर्वजों ने जो धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता का संदेश दिया है, समानता का संदेश दिया है, उसे कायम रखा जाए और उसका पालन किया जाए। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और एकता की अपनी सदियों पुरानी संपत्ति को दांव पर न लगाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को हल करने के लिए एक देश के रूप में मिलकर काम करें और एक बार दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ समझाएं। जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो राष्ट्र प्रथम होता है, दल द्वितीय होते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि अपने दल के हित को साधने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अगर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह अपने पार्टी के हित में करेंगे तो निसंदेह देश के लिए घातक होगा। मैं अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपसे चाहता हूं कि आप निर्देशित करें कि संविधान के विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता पे लोग कायम रहें, धर्म का दुरुपयोग न करें। गांधी का MP-led guidelines. मारी हिरण कडाली। धन्यवाद उपसभापति महोदय। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 1993 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से संसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि को क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति के निर्माण हेतु विकास कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2.11 को अंतर्गत धार्मिक प्रकृति को कार्य या धार्मिक पूजा को स्थानों, परिसरों को भीतर और धार्मिक आस्था समूह से संबंधित या स्वामित्व वाली भूमि पर होने वाली कार्यों के लिए इस निधि के प्रयोग में अनुमति नहीं है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मठ और मंदिर में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें हवन, भजन, कीर्तन और विवाह जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल है। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए निधि देने का प्रावधान है, लेकिन पर्याप्त भूमि के अभाव के कारण कोई अवसरों पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं हो पाता। धार्मिक पूजा स्थलों पर पर्याप्त भूमि होती है, लेकिन संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रतिबंध के कारण संसद अपने क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का विकास और उनके परिसर में
सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं कर पाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2.11 को निरस्त किया जाए और धार्मिक स्थल जैसे मंदिर और मठों में सामुदायिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक केंद्र और अन्य विकास कार्यों के लिए संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से निधि देने पर लगे हुए प्रतिबंध को तत्काल हटाओ जाए। नमस्कार। धन्यवाद कडाडी जी। माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण, डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिकंदराबाद कैंटोनमेंट एरिया। Thank you, Deputy Chairman, sir. This special mention is regarding the merger of Secunderabad Cantonment Board with the local Municipal Corporation of Hyderabad, sir. Sir, Secunderabad Cantonment Board covers a vast expanse of 40.13 square kilometers located in the heart of Hyderabad, a prime location, sir. It is widely recognized as a lung space of Hyderabad. But recently, the demand has been arisen for merger of this SCB into Greater Hyderabad Municipal Corporation, sir. Thus, SCB has a high proportion of B2 land, sir, constituting approximately 30% of the land composition. B2 lands primarily comprise private lands and state government lands. And over a time period, number of colonies and bastis have come up, and nearly 3 lakh population are residing in this cantonment board, sir. Sir, this as urbanization progresses rapidly, the population within the cantonment limit has witnessed significant growth, necessitating urgent focus on addressing civil infrastructure within the cantonment area, sir. It is worth noting that the participation of the then TRS government in terms of infrastructure development, extending grants and aid was negligible, and it was totally now neglected by the then government, placing the entire burden on the SCB administration, sir. So the residents of cantonment consistently express the need for improved civic amenities. Cantonment board diligently pursues us whenever funds become available. According to the complexity of the situation, road closures enforced by the army and local military have exacerbated the issues and grievances, sir. So the demand for merging in board with the GHMC was raised by the then party ruling. It was totally politically motivated, sir. The main hidden agenda behind is the open lands and the surplus lands left in the cantonment board. So they are being designated as the green spaces for Hyderabad. The availability of surplus lands such as OGB, B3, B4 category lands within the SB cantonment provides unique features, sir. The politically motivated conspiracy behind this is to grab that open lands. So now what I request is the main demand of the local residents to increase the FSI. आपका समय हो Sir, गया। I only request the government of India to... Dr. K. Lakshman, it's not going on record now. Sri GVL Narasimha Rao, demand for investment of around 500 crores for installing infrastructure for filtering of sewage water in Visakhapatnam city. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Sir, I'm happy to say that as a resident of Visakhapatnam, there is something to be very proud of. Visakhapatnam is one of the cleanest cities in the country as per Swachh Survections. In the last 3 years, it has ranked 4th every time. I would like to thank, first of all, Honorable Prime Minister and the central government for giving huge funds under various central schemes like Swachh Bharat, Amrit, Smart Cities Mission, G20 City, and many other ways. I think when the city was ravaged by Hudhud, it was central government and Honorable Prime Minister Modi ji who stood by the city. So there is so much to be proud of about Visakhapatnam. But there is also a concern, a rising concern about the high level of ocean pollution, which is possibly not evident to the public, but it has a huge negative adverse implications for the future.
So, some statistics. As per Parliament reply given to me in Rajya Sabha, Vizag's coastline, Visakhapatnam's coastline has receded 3.5 kilometers, which is 22% of the total coastal length in the last 30 years. And also there is reduced availability of marine life for the fishermen who go for livelihoods. This is all happening because of the development of a dead zone in the city, which results in death of ocean life. So this pollution is caused by more than 20 drainage canals which directly flow into the city without being treated. This untreated sewage water is creating a lot of, it's not only making the some parts of the beach, some parts of the coastline ugly, it is also impinging on the health of fishermen who live on the coastal line. It is killing the marine life. Therefore, I call upon the central government to assist the city of Visakhapatnam by formulating any project and to help the state government some kind of a financial assistance over a long-term basis with an investment of close to 500 crores to make this city survive in the longer run, to help the coastal line to remain alive, and also help fishermen in their livelihoods. The blue economy of Visakhapatnam is dependent on this factor, and I call upon the central government to assist, and I call upon the state government to get into action. Thank you. Not to really sleep over it and to understand the dangers of... माननीय विजयपाल सिंह तोमर। धन्यवाद उपसभापति महोदय। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गठन के पश्चात पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और इसका कारण है जब रोजगार सृजन होता है तो गरीबी उन्मूलन तीव्रता से बढ़ता है। इस उपलब्धि में बड़ा योगदान देश में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, देश में औद्योगिक माहौल बेहतर करना, कृषि क्षेत्र में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महोदय, प्रधानमंत्री जी स्वयं हर रोजगार सृजन के कार्यक्रम में रुचि लेते हुए प्रति माह 70,000 से लगाकर 1 लाख नियुक्ति पत्र युवक युवतियों को देते हैं। रोजगार देने के कार्यक्रम में तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालयों का बड़ा योगदान है। गत माह मैंने भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 रोजगार मेले आयोजित किए, जिनमें एक में 14 और एक में 18 कंपनियाँ आईं, और कंपनी भी अच्छी, जैसे एयरटेल है, ICICI बैंक है, श्री राम पिस्टल है, और उनमें 700 से अधिक युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मेरा विचार है देश के विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय एकीकृत बैंक द्वारा स्थापित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का इसमें महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। देश में नवयुवकों और युवतियों को रोजगार मिले तो देश के उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भी तीव्रता आएगी। महोदय, देश के विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से प्लेसमेंट सेल की यदि स्थापना की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से चाहूँगा कि ये सब संस्थान, चाहे विश्वविद्यालय हों, डिग्री कॉलेज हों या प्रशिक्षण संस्थान हों, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्थापित किए गए हैं, प्रत्येक माह एक रोजगार मेले का आयोजन करें और उसमें युवक और युवतियों को ताकि रोजगार मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। माननीय उपसभापति जी, ई फाइलिंग सेंटर की स्थापना का मेरा विषय है। आपदा में अवसर कोरोना काल में वर्चुअल पद्धति निकल कर आई। 4,20,937 केस सुप्रीम कोर्ट में 2.63 करोड़ जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुने गए। वादकारी का हित सर्वोच्च और सस्ता और सुलभ न्याय सरकार का सिद्धांत। 9 मार्च 2023 को न्याय मंत्रालय, भारत सरकार का एक पत्र सभी हाई कोर्टों को गया ई फाइलिंग के संबंध में। कर्नाटक, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी का उत्तर अनुकूल आया। भारत सरकार ने 7100 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था की 44वें ई फाइलिंग सेंटर स्थापित करने के लिए। उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और तेलंगाना में यह सुविधा प्रारंभ है। 25 हाई कोर्टों में 689 केंद्र चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने रिट पिटीशन संख्या में 6 अक्टूबर 2023 को कहा है कि आफ्टर ए लैप्स ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर, नो हाई कोर्ट शैल डिनाई द एक्सेस टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी और हियरिंग थ्रू द हाइब्रिड मोड
to any member of the bar or litigant desirous availing to such facility. उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी अपने पत्र संख्या 18 अक्टूबर 2023 को जिला न्यायालयों को आदेश जारी करके 1 नवंबर 2023 से ई फाइलिंग सेंटर शुरू करने का आदेश दिया। मेरठ में उस क्रम में 25 अक्टूबर को 1 नवंबर से ई फाइलिंग सेंटर चलेगा, ये आदेश भी हो गया। लेकिन अचानक रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्र संख्या 3542 सीपीसी ई कोर्ट दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को केप्ट इन अबाइंस लिखकर उस हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, भारत सरकार ने उसके अधीन पत्र लिखा था, तमाम उच्च न्यायालयों ने उसमें सहमति दी है, उच्च न्यायालयों में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय तेलंगाना में हुआ, करोड़ों केस सुने गए कोरोना काल में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि 6 अक्टूबर 2023 के 15 दिन बाद कोई कोर्ट हाई कोर्ट मना नहीं कर सकेगा, यह स्थगन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। इस दृष्टि से मैं सदन के समक्ष रखकर भारत सरकार से न्याय मांगना चाहता हूं। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी जी। माननीय श्री नागेंद्र राय, डिमांड टू इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ राजबंशीज एंड कमातापुर इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। Sir, I demand to include the history of Rajbangshi and Kamatapur in the NCERT textbook. The Rajbangshi community has a rich and heritage and culture which has been inherited from the ancient civilization. The Rajbangshi community is their own dialect, culture and way of the living. The culture reflects the humbleness, peace and harmony with nature. His Highness Maharaja Jagdeep Dhankhar was the last Maharaja and the greatest warrior beside the Bir Sujya Vishwa Mahavir Chilarai, the younger brother of Maharaja Naranarayan. Naranarayan was the greatest hero in the world. In December 1950, President of the Greater Kujbar People's Association had requested the Government of India in conclusion of the glorious history of the Rajbangshi and Kamatapur in the NCERT textbook for the benefit of the student, linguists and benefit community. In reply to this, in assurance was the given, then that is the matter would be placed before the textbook development committee of still now. History of Rajbangshi was not published. The great leader of Rajbangshi, their love, affection, the development for the people need to reach on the present and future generation so as to under the Indian history. I therefore request the central government to include the contribution the Rajbangshi and Kamatapur in the textbook of the NCERT. Thank you. Thank you, Sri Nagendra Rai ji. Mani M. Sanmugam, concern over delay in increasing minimum monthly pension of EPF pension to ₹9,000. Thank you, Chairman, sir. I raise to concern over the delay in increasing minimum monthly pension of workers under Employees Provident Pension Scheme. Sir, huge amount is lying with the Ministry of Finance as unclaimed amount. As many workers shift from one company to another, their EPF contribution remain unclaimed. This is the position up to the year of 2014. In 2014, Universal Account Card was introduced with the result. The employees workers continue to get the EPF subscription irrespective of the change from one company to another. And the corpus fund of the pensioners who expired between 95 to 24 is also there. The government should merge corpus fund lying with the government department and unclaimed amount to enhance pension fund under the EPF scheme. I demand that the government should enhance immediately the minimum monthly pension under EPF scheme to ₹9,000 as demanded by various trade unions. Hence, the amount from corpus fund and the unclaimed amount which belong to the workers should be merged with the pension fund for the purpose of EPF scheme
so that the actuary valuation will go up. Similarly, the formula for calculation of EPF pension does not reflect the reality like actuary and the funds lying with it, which is prejudicial and to the pensioners. Therefore, the calculation formula should be revised in the favor of pensioners. For giving higher pension under the EPF pension scheme for those who contribute more money, the existing formula calculation pension will not work, and therefore it needs to be revisited and revised. I would therefore demand that government should call a meeting of Central Trade Union for consultation so that the viable formula may be worked out for calculating the pension under EPF pension scheme. Thank you, sir. Thank you, Shanmugam ji. Dr. Amar Patnaik ji demand to include Ho, Sambalpuri, Saroa and Mundari languages. Thank you, sir. Sir, Odisha occupies a very special position in the tribal map of India with 62 ST communities and 13 primitive tribes. They constitute 22.43% of the total state population. With this, Odisha has one of the highest percentages of tribals in India. So there is a long-standing demand of the Odisha government to include Ho, Mundari, Bhumish, Kui and Saura languages in the 8th schedule of the Constitution. The exclusion of these languages denies tribal linguistic communities access to education in their native tongue, perpetuating their marginalization. For instance, the Ho language, spoken by approximately 10 lakh tribals in Odisha and Jharkhand, and Mundari language spoken by over 6 lakh people of Odisha and Mundari tribes are deserving candidates for constitutional recognition. So Honorable CM Naveen Patnaik, Odisha CM Naveen Patnaik had written a letter to the Union government in 2014 in this regard. However, their demand remains unheard. The incorporation of these languages into the 8th schedule will contribute significantly to their preservation and dissemination. This inclusion will catalyze various initiatives such as publication, content creation, and will also establish an ecosystem of conducive to research and studies focused on their preservation and promotion, fostering a robust platform for scholarly engagement in these areas. Sir, moreover, on September 16, 2022, Honorable Chief Minister Naveen Patnaik ji had also written a letter to the Union Tribal Affairs Ministry reiterating their long-standing demand for inclusion of 169 communities in the state's scheduled tribe list. In December 22, again a delegation of BJD MPs met the Union Tribal Affairs Minister and demanded inclusion of all the 169 tribal communities of Orissa in the list. However, despite the state government and Honorable CM's persistent requests and demands, not all the tribal communities have been included in the Constitution, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders 2024, passed in the Rajya Sabha yesterday. Only 53 have been included out of 169, which had fulfilled all the conditions and all the processes. For the remaining tribes, Honorable CM has been impressing on having joint meetings of all the involved ministries and state government to expedite the process. Even after the prioritization of 9 proposals by a Ministry of Tribal Affairs task force in 2014, many recommendations remain unaddressed. Thank you. Sir, Orissa has already taken initiative in this regard by constituting special development councils. Thank you. Mani Sri Biplav Kumar Dev. Mani Biplav Kumar Dev. Thank you. महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय के अवगत करना चाहता हूं कि एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला त्रिपुरा भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। वहां नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन 4/1/2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां व्यस्त घंटे के दौरान 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संभालने की क्षमता है। 20 चेक इन काउंटर है एवं 3 मिलियन यात्रियों को वार्षिक क्षमता है। अगरतला चिटागांग मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 18.85 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भुगतान कर दिया है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एवं ग्राउंड लाइटिंग सुविधा मौजूद है। रनवे की लंबाई 286 मीटर है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 4/1/2023 को एमबीबी हवाई अड्डा को सीमा शुल्क चेक पोस्ट घोषित कर दिया है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इस संबंध में घोषणा की प्रतीक्षा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस विषय में माननीय नगर विमान मंत्री जी को पत्र लिखा था, जिसके
उत्तर में उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन चेक पोस्ट का विषय गृह मंत्रालय का Question hour. आता है। माननीय Honorable member, question hour. Question number 46, Shri Mithilesh Kumar. Not present. Honorable Minister. पटल पर रखा है। Dr. Fozia Khan for supplementary. Thank you, sir. Sir, the Social Justice Department has limited spending on key schemes such as the seed scheme for denotified, semi-nomadic and nomadic tribes, the National Action Plan for Drug Reduction, Demand Reduction, sir. Similarly, the Tribal Department also is underutilizing funds in Eklavya Model Residential Schools and the PM Adi Adarsh Gram Yojana transfer. Sir, what measures has the government implemented to identify and address the bottlenecks hindering the effective utilization of these policies and funds, given the increase in budgetary allocation for these schemes and the ministry despite the underutilization, sir? Honorable Minister. सर, ये पंचायत राज मंत्रालय के संबंधित प्रश्न नहीं है। Second supplementary of the remaining three, Shri Sandeep Kumar Patak. Thank you, Honorable Chair, sir. Sir, Mr. Adivasi... Bassan. Yes. Thank you, Honorable Chair, sir. सर, आदिवासी भाइयों के अधिकारों, रीति रिवाज, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पेसा कानून 1996 में लागू किया गया था। इसके तहत लगभग 10 राज्यों में इस कानून को अब तक लागू हो जाना चाहिए था। सर, लगभग 28 साल हो चुके हैं, ये कानून सिर्फ कागजों में है, अभी तक धरातल पे उतरा नहीं है। कई भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि गुजरात। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 28 साल हो चुके हैं, 10 साल लगभग आपकी सरकार आ चुकी है, और कितना समय इसको धरातल पे उतरने में लगेगा? सर, ये प्रश्न से संबंधित प्रश्न नहीं है। इनको पैसा की जानकारी अगर चाहिए तो अलग से दी जाए। में है Dr. Amar Patnaik. He can. Sir. One second. Honorable members, sometimes it appears to us that the answer is not forthcoming with respect to the supplementary. But we ignore one fact, that the supplementary is not relatable to the question. And therefore, the minister is well within his rights that it's a good supplementary, but it does not emanate from the question which is before the House. Dr. Amar Patnaik. Sir, the action by the ministry to train the Panchayat Raj representatives in management leadership in one of the topmost management institutes of the country, which is Indian Institute of Management, Ahmedabad, is really praiseworthy, sir. So my question is, whether the modules include digital education to these political representatives, because on one hand, we are trying to increase the intensity of digital footprint in the rural areas, and unless these representatives are actually educated and trained in handling these digital assets, they would not be able to exercise their management skills. So whether this forms a component of the entire leadership program is a suggestion, and also if it is there, then it will be welcome. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से जो पंचायत राज संस्थान के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के आधार पर भी दिया जाता है। और वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में 2005 से लेके 2014 तक 27 लाख प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन 2014 से लेके 2024 तक
लगभग 3 करोड़ 26 लाख जनप्रतिनिधि को प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें जनप्रतिनिधि जैसे चुन के आते हैं, 6 महीने के अंदर उनको सामान्य अभिमुखीकरण का प्रशिक्षण, जैसे जनरल ओरिएंटेशन, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर पुनश्चर्या कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। पंचायत विकास योजना जीपीडीपी, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमारी पंचायतें लगभग 2.5 लाख पंचायतें जीपीडीपी के माध्यम से गांव में जो उनके विकास का प्लान करते हैं वो जीपीडीपी के माध्यम से लोड किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी पंचायतों ने निश्चित तौर पर आत्मसात कर ली है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हम राजनीति में कहते हैं कि पंचायत से पार्लियामेंट तक, लेकिन हमारी पंचायतें अभी पार्लियामेंट से पंचायत तक इस तरह का काम टेक्नोलॉजी का करने लगे। ये एक तरफ केंद्र सरकार पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट करती है, वहीं पे हमारी पंचायतें भी लगभग 2.5 लाख पंचायतें पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट करने लगी। ऑडिट ऑनलाइन भी 100% पंचायतें ये ऑडिट ऑनलाइन करने लगी है। निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, वो संकल्प के तरफ हमारी पंचायतें भी आगे बढ़ रही है। हमारी पंचायतें अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी गांव का डीपीआर बनाना हो, गांव की विकास योजना हो, गांव का डेवलपमेंट प्लान बनाना हो, वो सारों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पंचायतें आगे बढ़ रही हैं। इस सदन में कुछ सदस्य हैं जिनका सफर पंचायत से शुरू हुआ और पार्लियामेंट तक पहुंचा, वर्तमान में भी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1, डॉक्टर मित्तल। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हाईवे निर्माण में देश में बहुत ही बढ़िया काम किया और हमारा देश हाईवे में ऊपर जा रहा है लगातार। इसी में आगे बढ़ते हुए मंत्री महोदय जी ने 4 धर्म स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 4 धाम योजना शुरू की है। मैं पंजाब से आता हूँ। जिस प्रकार हिंदू धर्म में 4 धाम है, वैसे सिख धर्म में 5 तख्त हैं, जिसमें से 3 पंजाब में आते हैं, 1 बिहार में और 1 माननीय मंत्री जी के अपने होम स्टेट महाराष्ट्र के नंदेड़ में आता है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इन 5 तख्तों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए भारत सरकार क्या करने जा रही है? माननीय मंत्री जी। सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश के लोग जहाँ रिलीजियस टूरिज़्म तीर्थाटन के लिए जाते हैं उसमें अच्छे रोड बने। करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने बुद्ध सर्किट, ये जो पूरा जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, जहाँ उनका देहांत हुआ, सब जगह को 4 लेन रोड से जोड़ा है। फिर उसी प्रकार से हमने अयोध्या सर्किट बनाया है। अयोध्या सर्किट में भी विशेष रूप से हम करीब 30,000 करोड़ का राम वन गमन यात्रा, सभी प्रकार का, सीता के जन्म स्थान नेपाल के भूमि तक वहाँ से उसमें कनेक्टिविटी की है। महाराष्ट्र में हमारा पंढरपुर हमारा बहुत एक लोगों का श्रद्धा का विषय है। तो देहू से पंढरपुर और आळंदी से पंढरपुर ऐसे 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग भी बनाया है। अभी सम्माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे थे, विशेष रूप से सिख पंथ में धर्म में जिस प्रकार की श्रद्धाएँ हैं, उसमें अमृतसर से कटरा ये हाईवे हम जब बना रहे थे तो अमृतसर से जाते समय 4 भव्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुरुद्वारा थे, वो छूट गए थे और हम बाहर से कटरा जा रहे थे। तो विशेष निर्णय लेकर वो चारों को जोड़कर वो रोड बड़ा करके उसका भी निर्णय किया गया। जहाँ तक इस प्रश्न में आज नांदेड़ से लेकर आपने जितनी बातें की है वो इस प्रश्न का भाग नहीं थी, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं थोड़ा एकदम प्रिपेयर एकदम शायद एक मेरे को लगता है कि वो सही है कि जितने गुरुद्वारों के बारे में आपने उल्लेख किया है, लगभग उन सब को हमने 4 लेन से अच्छी तरीके से जोड़ दिया है। अगर इसमें से कोई छूटा होगा ऐसा अगर ध्यान में आएगा तो वो भी जोड़ेंगे। ये तीर्थाटन बनने से आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
बड़े प्रमाण पर लोग आ रहे हैं। जैसे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि 4 धाम का काम अभी थोड़ा ही हुआ है, आधा हुआ है, फिर भी इतना लोग आ रहे हैं कि टूर आने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। और जब टूरिस्ट आते हैं तो 49% एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ हमारे तीर्थाटन के जो स्थान है उसकी कनेक्टिविटी, अब उसमें पार्किंग प्लेसेस, रोड साइड प्लाजा जिसमें और इलेक्ट्रिक चार्जिंग से लेकर सब प्रकार की सुविधा है, और विशेष रूप से सरकार की ओर से पर्यटन विभाग की ओर से भी वॉशरूम्स और बाकी बातों का वो भी काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे जैन धर्म के लिए भी हम लोग इसी प्रकार से जोड़ रहे हैं। सब प्रकार के मुस्लिम इसमें भी जो स्थान है उसको भी जोड़ने का हमने काम किया है, ताकि जो अब लोग वहाँ जाते हैं तो उनकी सुविधा हो। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्र। धन्यवाद सर। सर, जो मेरा पहला प्रश्न था मैं उसमें एक और निवेदन करूंगा कि हेमकुंड साहब को भी 4 लेन से जोड़ने के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। सरकार ने 56,000 करोड़ के बीओटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से शुरू करने की योजना बना रही है। आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2022 तक 120 बीओटी प्रोजेक्ट्स में 48,000 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इतने वर्षों में भी फाइनेंशियल वायबिलिटी वाला मॉडल क्यों नहीं निर्धारित किया जा सका, ताकि जो भविष्य में हाईवे सेक्टर में एनपीए कम हो सके और जो 56,000 करोड़ के नए बीओटी आ रहे हैं वो फाइनेंशियल वायबल हो सके। माननीय मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हेमकुंड साहब का जो डीपीआर है उसमें एक रोपवे का निर्माण हम कर रहे हैं, और शायद इस अधिवेशन समाप्त होने के बाद उसका भूमि पूजन करेंगे तो रोड के बजाय आप रोपवे से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हिमाचल में रोड बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ दोनों बाजू में फॉरेस्ट है और लैंड एक्वायर करना भी कठिन है, और हिमालय का जो स्टार्टा है वो भी कभी भी गिर जाता है। तो ये रोपवे उसके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। शायद अगले साल में आप इस रोपवे से हेमकुंड साहब दर्शन करने निश्चित रूप से जा सकेंगे। सर, ये जो उन्होंने बीओटी प्रोजेक्ट की बात की, ये 4 प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। ईपीसी जो हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए देते हैं, फिर बीओटी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र जिसमें कॉन्ट्रैक्टर खुद पूरी तरह से काम करता है, कंप्लीट करता है, और फिर उसका कोट करता है कि इतने साल तक मैं टोल लूँगा, जिसकी ऑफर अच्छी होती है उसको काम अवार्ड होता है। और तीसरा, बीच में जब मैं मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के ये बन पड़े थे, और 3 लाख करोड़ का एनपीए बैंकों में खड़ा था। अध्यक्ष महाराज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट सबको बुलाकर हमने ये सब प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर दिए। 20% प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, उसको रेगुलराइज कर दिया। जहाँ तक वो इस पूरे प्रकरण में आपने वकीलों की फीस पर बड़ा कुठाराघात किया है। हाँ, ये बात जरूर है सर, विवाद अगर खत्म हो गए तो वकीलों का काम ही नहीं आता। सर, ये दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बीओटी के कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैंने एक नया आइडिया तैयार की है, वो ऐसी है कि जैसे धनवान परिवार में अगर बच्चा नहीं होता तो दत्तक लेते हैं। तो पहला प्रयोग ऐसा हो रहा है कि पुणे से औरंगाबाद हम हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे 2 घंटे में पुणे से औरंगाबाद होगा। अब वो बीओटी पे करना है, तो एग्जिस्टिंग रोड के जो 4 टोल थे वो हम बीओटी ऑपरेटर को दत्तक देंगे, और वो पूरा पैसा 15,000 करोड़ खुद के लगाकर वो काम करेगा। ऐसा भी नया बीओटी ढूंढा है जिसमें सरकार का कोई पैसा लगेगा नहीं। तो अभी जो आप बता रहे हैं ऐसा बीओटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय जो प्रॉब्लम हुए थे वो लैंड एक्विजिशन के कारण, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण, तो अभी हम ये किए बिना ही हम लोग प्रोजेक्ट अवार्ड ही नहीं करते। तो अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पर बीओटी कर रहे हैं। अभी चेन्नई में हम एक रोड, उसके ऊपर ब्रिज, उसके ऊपर ब्रिज, फिर उसके ऊपर मेट्रो, फिर अभी पुणे में हम 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब बीओटी में कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, और अभी बैंक भी सपोर्ट कर रही है। और हमारा बॉन्ड इशू जो था अध्यक्ष महोदय, मुझे हमारे यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं है। हम जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया था हमारा इनविट मॉडल का,
तो 7 दिन की लिमिट थी और 7 दिन के बाद वहाँ स्टॉक एक्सचेंज जाकर मुंबई में वो घंटी बजाकर उसको समाप्त करना था, पर पहले ही दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा जनता ने हमको दिया है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि अब हम लोग रोड बड़े लोगों के पैसे से नहीं बनाना चाहते, छोटे लोगों के पैसे से बनाना चाहते हैं। और हमारा बॉन्ड इश्यू में हम 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहे हैं। और ये भी सुविधा की है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको हर महीने में, यानी हर महीने में इंटरेस्ट उनके अकाउंट में जमा होगा। तो 8.05% कोई बैंक नहीं देती, कोई नहीं देता। तो आप सब रिटायर्ड होने के लिए जो लोग रहेंगे वो हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको 8.05% इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पैसे से अब रोड बनाएंगे और उसका फायदा गरीब आदमी को मिलेगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं। श्री संतोष कुमार पी। Sir, this toll booths are an integral part of national highways. So may I know the total amount of money collected through toll booths in the national highways of Kerala during the last financial year? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं था, इसका मैं जवाब देता हूँ। केरल का मेरे पास नहीं है, पर टोटल अभी अप्रॉक्सीमेटली 49,000 करोड़ हमारा इनकम है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, और इसलिए हम ये अभी निश्चित रूप से फास्ट टैग, यानी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, वो था जिसके ऊपर आप निकल जाते थे, वो 98.5% उसका पेनिट्रेशन हुआ। और अभी तक फास्ट टैग जो इशू हुए वो 8.13 करोड़ हुए हैं। एवरेज डेली कलेक्शन 170 से 200 करोड़ रुपए तक आता है। और पर मैं आपको सभागृह को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जल्दी ही हम शायद इस हमारे लोकसभा चुनाव के पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले, हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। श्री GVL नरसिम्हा राव, इनका भी सफ़र पंचायत से पार्लियामेंट तक है, सरपंच रहे हुए हैं। Thank you, sir. I'd like to congratulate Honorable Prime Minister and Honorable Minister for sanctioning more than 50,000 crores for highways this year. Sir, my question to Honorable Minister is about a particular toll plaza in Visakhapatnam city, Aganampudi Plaza, which is on a national highway, old national highway. A new national highway has already been constructed between Sabavaram and Anakapalli, but this old toll plaza continues to exist, and the people are actually, local people also do not have any exemption. As a result, they are suffering a lot. I'd like to appeal to the Honorable Minister to have the matter examined and to get this Aganampudi toll plaza removed as early as possible, sir. Thank you, sir. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये कुछ जगह पर अड़चन आई है। हमारी सरकार आने के पहले यूपीए के कार्यकाल में प्रोजेक्ट में इकोनॉमिकली वायबल करने के लिए एक स्वीटनर करके नाम आया, और स्वीटनर के रूप में ये किया गया कि शहर के नज़दीक टोल खड़े किए गए और बाद में वो टोल के टेंडर निकाल कर वो प्राइवेट पार्टी को मिल गए। अगर आज हम उसको टर्मिनेट करते हैं तो वो पार्टी हमारे ऊपर क्लेम डालती है, उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। पर आप कह रहे ये प्रिंसिपली बहुत सही है, और इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा इसलिए कि इस देश में टोल रोड की शुरुआत मैंने की, पहला पॉलिसी बनाई, और इसलिए शहर के बाजू में वो नौकरी करने जाता है उसको टोल लगता है। ये ठीक नहीं है। तो इसके बाद हम निश्चित रूप से ये कर रहे हैं कि शहर के बाद 6-7 किलोमीटर दूर बाद में टोल होंगे, ताकि गांव वाले जो रोज़ इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं उनको तकलीफ ना हो। जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हम लोग रद्द नहीं कर सकते, नहीं तो वो कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। तो फिर भी नए इसमें ये जो आपकी तकलीफ है ये सही है, ये निकल जाएगी, ये हम जरूर प्रयास करेंगे। श्रीमती सुलता देव। थैंक यू चेयरमैन सर।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे स्टेट ओडिशा में कितने NH कंप्लीट हो चुके हैं और कितने अनगोइंग है। जो अनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, खासकर NH 55 जो कटक संबलपुर रास्ता है भाया अनुगुल, वो अभी डेथ ट्रैप हो गया है और वो रास्ता कब तक ख़त्म होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा की पूरी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, पर इन्होंने जिस प्रोजेक्ट का उल्लेख किया था वो गायत्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था। वो कंपनी अब NCLT में चली गई है, पर उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर को एस्क्रो अकाउंट खोलकर पैसा देकर हम काम पूरा कर रहे हैं। मेरी जानकारी है कि आने वाले 2-3 महीने में ये काम बरसात के पहले पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, श्री KR सुरेश रेड्डी। ऑनरेबल मिनिस्टर। The House. Supplementary 1, Shri KR Suresh Reddy. Chairman, sir, 65% of the youth in our country are in the working age group, sir. That's a very big demographic dividend. But the agony is the business and industry are disappointed with the graduates lacking the right kind of skill for employment, sir. Some of the figures state that for filling up jobs, the difficulty in filling up jobs in India is 58% compared to the global 38%, sir. So the Honorable Minister's reply has stated that the National Skill Qualification Framework is notified. So my question is, after notification, as the percentage of the unemployment or the employment opportunities increased? So I would like the Honorable Minister. Honorable Minister. Chairman, sir, let me politely answer. The recently published NSSO data very loudly speaks. In the recent past, the unemployment ratio has been drastically reduced. From 5 years ago, the percentage was around 6 point something. 6% is the unemployment percentage, 6%. Now, with reduced number, it is 3.1. So this is a basic raw fact, bare fact I am putting in front of you. Regarding the skilling ecosystem in education, this is a broader question, Chairman, sir. There is a national education policy implemented by visionary Prime Minister Narendra Modi from 2020. There is a paradigm shift. The concern, the challenges, I agree with the concern and challenges. Because the way, the kind of education system we are now are passing through, we are implementing, there is a disconnect between certificate, degree and competency. That's for looking into that, Prime Minister Modi has very categorically said, degree is important, competency is also important. To implement that vision, in the National Education Policy 2020, if I cite one example, one implementation strategy, now in our high school curriculum, in the college curriculum, in the high school area from class 6 to class 12, now we are teaching 5 subjects, sir. Language, mathematics, science, social science and environmental science. The NEP 2020 recommends 3 additional subjects. What are they? Vocational education / skill. Till now, skilling and vocational education are elective subjects. They're optional. They're extracurricular. From next academic year, the skilling, art and culture and sports, all these 3 new subjects will be part of the proper textbook. This is a paradigm shift by Modi government to looking into the global need, looking into our country's youth aspiration. We are going to change in a very exponential route. And I think with this strategy, in the future, India will be the skill manpower hub of the globe. Second supplementary, Shri KR Suresh Reddy. Yeah, thank you again, Chairman, sir. So my second supplementary to the Honorable Minister is, has the government introduced any region-specific courses
We have seen the ITIs, for example, sir. The ITIs also need a lot of modernization. ITIs have to understand to what is the present need. So are the ITIs also being upgraded to the present requirements where they would create jobs? Honorable Minister. Chairman, sir, this is a very pertinent question by honorable member. He is right. Now we have to upgrade and we have to go for the emerging areas of the need. I can cite one example. Recently, our government is implementing drone Didi, Nomo drone Didi in the rural area for agricultural labor forces. To cater the need of Nomo drone Didi, almost all ITI have realigned their course. How the Namo drone ecosystem will emerge. I am citing one example of drone in the healthcare area, in the logistic area, in the coding, in the IT sector, in the ITI also, new emerging jobs, skills are emerging, and NCBT with collaboration of industry, we are going to implement, we are already implementing new courses in ITIs. Dr. V. Shivdasan. Honorable Minister Dharmendra Pradhanji replied on various courses as part of the skill development program. But without the financial investment, the achievement on qualification and standard are mere mockery. So please provide the data, state-wise data of the allotment to the state and the expenditure of the union government for the skill development program and the details of the implementing agency. Thank you, sir. Thank you. Honorable Minister. Chairman, sir, I politely beg to differ with my dear friend Shiva. In this house, I think he should not use the word mockery. He may disagree with me. Skilling is a... What? He used the word, sir, mockery. I think it's a little harsh on the joint responsibility. No, I am not so enlightened like Shiva, like you. You can replace with the good words, but I can only request you. But let me put... No. Honorable Minister, you are underestimating yourself. No, Don't sir, say you are not as enlightened. You are. Oh, there was no room for sir, you. I am not good at English, sir. I belong to the vernacular state Odisha, so I am not good like my dear friend Shiva in English. But let me, with my little understanding, let me clarify. ITI and skilling, this is not the monopoly issue of central government. Government of India, for the first time in our history, has created a new department, skill development and entrepreneurship. Till now, it's a very small appendix of a labor department. That means our government is giving priority to skilling ecosystem. In last 10 years, we have a number of 1 crore 40 lakhs youths have been gone through the Government of India sponsored skill ecosystem through NSDC. I can give numbers to him regarding his state and to the different state. But ITI ecosystem, skilling, they all belong to states' responsibility also. Lot of states are also doing good job in the skilling. I don't know how he is update about his own state, but according to me, Kerala government has a very progressive policy for skilling for the Gulf area. They are working jointly with Government of India. We are extending all kind of cooperation to states like Kerala, and we are working together. At least in a democracy, he may disagree with me, but he should not laugh at my English or my vocabulary. Dharmendra ji, you are a man of substance. Don't take it to your heart. No one can mean disrespect to you. Sujit Kumar, for supplementary. Sir, the Honorable Minister referred to the new education policy. One second. And if someone has to laugh about, your chairman is here. He will take everything on his chest. People do laugh about me also. Let us take it in a spirit. Sujit Kumar. Sir, the Honorable Minister referred to the new education policy 2020, which no doubt is a very, very forward-looking policy. But, sir, if we are to get the maximum of this game-changing policy,
People at the district level, at the panchayat level should know about it. Sir, I'm afraid it has been disseminated to the state capitals, but if you ask parents at the panchayat level, district level, if you ask the PRI members, most people will not know about the nitty-gritties of the new education policy, which is such a great policy. So I would like to know from the minister, is there any plan to make people at the panchayat, block and district level aware about the new education policy? Honorable Minister. The new education policy has been envisioned. I can, with utmost responsibility, I can say, after Constitutional Assembly debate, envisioning a new education policy which is known as NEP 2020 has a wider consultancy mechanism given direction by Prime Minister himself and piloted by none else than a very eminent person of our country, Dr. Kasturi Rangan. Lot of consultancy are still going on. All states are involved, especially the SCRT of the respective states are in charge to implement the national education policy in their respective state. Yesterday only, we have a fair on the adult literacy. I can happily share with you, almost all states, there are a lot of things envisioned in the NEP. One component is adult literacy. In adult literacy, I can very proudly say, almost all states are doing, in the banner of Ullas, they are doing wonderful jobs. So there is a unanimity in implementing NEP at grassroots level. That is our experience, Chairman, sir. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। मैं पहले तो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वोकेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हो रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वोकेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट से कितने युवकों को लाभ हुआ है, इसके लाभार्थी कितने हैं और कितनों को जॉब मिला है या उन्होंने अपना बिजनेस या स्टार्टअप किया है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। थैंक यू। चेयरमैन साहब, मिनिस्टर, जैसे मैं शुरुआत की आदरणीय सुरेश जी के प्रश्न पे उत्तर दिया कि इन दिनों में जो बेरोजगारी की तथ्य कह रहा है ये घटी है, इसकी अर्थ नया रोजगार सृजन हुए हैं। अगर हमारी देश की अर्थनीति आज विश्व की 5वें स्थान पे पहुंची है, इसके अर्थ है देश में नया रोजगार की सृजन हुई है। अगर इस देश में 11 लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके अर्थ है हमारे देश में रोजगार बढ़ी है। और बाकी कितने लोगों को प्रशिक्षण हुआ, और इन दिनों में हमने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों की प्रशिक्षण हुआ। मेरे मित्र भूपेंद्र यादव जी यहाँ नहीं है, लेकिन श्रम विभाग की EPFO की डाटा, शायद हाईएस्ट नंबर EPFO डाटा में एनरोलमेंट हुई है। ये प्रमाणित करती है हमारी देश में नौजवानों ने, मुद्रा की सर जब देखिए, स्वनिधि की नंबर्स देखिए। इन दिनों में परम आदरणीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बयानों में पिछले 2-3 दिनों में उसके बारे में तथ्य आधारित जानकारी दी इस सदन को। ये प्रमाणित करता है आज हमारे देश की अर्थनीति की जो स्थिति है, रोजगार, युवाओं को रोजगार में काफी एक उछाल आई है, लोगों में एक उत्साह भरी है। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केरल राज्य में नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, इस योजना के अंतर्गत ड्रग्स की समस्या जो इस समय देश में बहुत बढ़ती जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए क्या पहल की गई? ऑनरेबल मिनिस्टर। The drugs reduction in the country, and we are giving funds to the Kerala. I have already spent the money for this one.
And we are giving the funds for the awareness of these drugs to the NGOs as well as the government institutions in the all over the country, even for the Kerala also, sir. Second supplementary, Dr. Sudhanshu Trivedi. मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं और उपलब्धियां प्रदान की जा रही हैं? Honorable Minister. Sir, we are having so many schemes in the Social Justice Department. We are working on the social sector in the entire country, sir. We are giving funds to the states to have a senior citizens houses in the whole the country, sir. And also we are giving the aids and appellants to the senior citizens wherever the state governments are sending requisitions to the department, sir. Third supplementary, Ilamaram Karim. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Sir, in the reply of Honorable Minister, it is seen that the fund allocated to Kerala for various schemes under the Ministry of Social Justice and Empowerment from 2017 to 2024, it is drastically reduced. What is the specific reason for that other than political? Honorable Minister. Sir, Honorable Chairman, there is no question of reducing the funds allocated to the Kerala, sir. Since we have given the detailed report on only 7 years. It is there, the 7 years I have submitted, I have circulated all the copies, to all the members, sir. It is there. You might have known, sir. Earlier, the scholarship in the country, the small amount we have to, earlier the government is given small amount of scholarships. Whereas after BJP came to power, after the Modi became the Prime Minister, we have changed the scholarship model in the country, sir. We are giving the scholarship on the model of 60-40. If the government is, state government gives 40%, we will give the 60%. If you go through the 10 years, what we made it, post-metric scholarship to the students belongs to scheduled caste for the studies in India. We have raised 14 to 15 to 20 to 24, 477 crores in the Kerala, sir. Pre-metric scholarship for ST students, others, 305 lakhs beneficiaries getting from 81.28 crores for the pre-metric scholarship, sir. Even higher education and younger achievers in the Kerala, sir. The 1920 onwards, total 90 students have been provided assistance under the National Overseas Scholarship Scheme in the state of Kerala. 1920 onwards, total 692 students have been provided assistance under the National Scholarship in the state. So if you want, it is the 10 years data, sir. Yes, Honorable Minister. He can go for the analysis, sir. He can go website, sir. You can get all the details in the website only. There is no to get any answer from here. But anyway, I have got the documentation. Even schemes for the residential education students, higher schools in the targeted area. Honorable Minister, please sit down. Honorable Minister, yes, Dr. Right before us, the plates that you have given gives all the figures. So don't read something different from what is given Dr. to us. Keshav, Something wrong. through me. So something wrong. Subject-wise details are given in the reply. I am referring that. He okay. is referring some other things. No. And I have submitted only the 4 years data. He asked only the 21, 24. But I have submitted 7 years data on this record, and I have got the 10 years data. Whatever the government is spending on this for the social sector scheme, you have given the 10 years data, sir. 1 second. No. Honorable Minister has indicated he is making available data for 10 years and years less than that also. Please, yes, sir. Sir, every year, the government of India budget is increasing. This year, our budget is nearly 14,000 rupees we allotted in the budget, sir. In our budget, we have allocated for the SCs only, sir.
1,30,000 crores, sir. Now, we have no limitations. We are working for the sector, social sector of the public in the country, sir. For supplementary, Mr. P. Wilson. Sir, I think the Honourable Minister will be in a position to answer this. Sir, there are no reservations for OBCs in all India seats of national law universities functioning in all states, including in Kerala. Sir, what steps have you taken to implement reservations in all India seats in national law universities? Thank you, Chairman, sir. It is not related to the main question, sir. Thank you, sir. Prima facie, it doesn't relate to the question, Mr. Wilson. In Kerala also. We are talking about social justice in Kerala. I'm saying social justice in... You may have a cup of tea with the Honorable Minister. Yes, Chairman, and I'm sir. sure he'll help you out with the... In Kerala, I'm asking in Kerala, at least, why can't you enforce this social justice in Kerala? In Kerala National Law Universities, the seats surrendered for national, all India seats, they are not giving reservation particularly for OBCs. Point well taken. Thank you, Chairman, sir.